अब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान डू मोर के दबाव से निकल गया है। साबिक अमरीकी सफ़ीर कैमरॉन मिंटर का पाकिस्तान के बारे में अमेरिका की नाकिस सोच का एतराफ़। उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन के मौका पर पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर रहने वाले कैमरॉन मिंटर ने इस बात का एतराफ़ किया है कि माजी में पाकिस्तान से मुतल्लिक अमेरिका की सोच इंतहाई नाकिस थी, क्योंकि किसी को कमतर समझना या बढ़ा चढ़ा कर पेश करना दोनों ही गलत है। आगे चलकर आपको कैमरॉन मिंटर के अल्फाज भी सुनाते हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में साबिक अमरीकी सफ़ीर कैमरॉन मिंटर ने दो तरफा ताल्लुकात के लिए अपने मुल्क की नाकिस सफारती पॉलिसी पर कहा कि माजी में पाकिस्तान के बारे में अमेरिका की सफारती सोच नाकिस रही, क्योंकि पाकिस्तान को खित्ते के मजमूई तनाज़र में नहीं देखा गया। डुमोर की बजाय बराबरी की बुनियाद पर इस्तवार होने वाले ताल्लुकात ही पायदार हो सकते हैं। साबिक अमरीकी सफ़ीर ने मजीद कहा कि अब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान डुमोर के दबाव से निकल गया है और ये पाकिस्तान के लिए कलीदी मौका है कि वो अपने लिए तरजीहात का तयन करे। दूसरी जानिब तकरीब से खिताब में साबिक अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा रॉबन राफेल ने कहा कि बेहतर सफारती ताल्लुकात के लिए बुनियादी तरजीहात का तयन ज़रूरी है। अफगानिस्तान पर हमला सफारती धोखा था। अमेरिका को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी की ज़रूरत है। अमेरिका पाकिस्तान समेत किसी कौम पर तनकीद नहीं करता। हमें बुनियादी चीज़ों पर जाना होगा, पैरामीटर से सीख कर नए मौके देना होंगे। तकरीब में शरीक मेहमानों ने मुश्किल सूरत हाल से दुचार अफगान अवाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा और आलमी बरादरी पर अफगानिस्तान को इंसानी बुनियाद पर मदद फराहम करने पर भी जोर दिया। My intervention today will be, I think, a little different than what you've heard so far. I just have really two areas that I want to address. Not so much the tour d'horizon, the broad interpretation that I think we've heard from our two speakers, but 2 points that I hope will be useful to you and to our friends in Pakistan and the region in understanding where America may go and what Pakistan may want to do about it. So it'll be very forward-looking. I won't relitigate the issues of the past. I'll try to contribute to an understanding of how we will deal with things in the future. First of all, I commend the focus on geoeconomics that comes from the minister. We heard yesterday from even from the Prime Minister and from his advisor. The geoeconomic effort is an effort that I choose to interpret as a way to deal with these times that are uncertain, to try to understand in which ways diplomacy can work in a constructive way, in a new way, to try to get past some of the constraints we've had in the past. I think one of the problems is looking, and the 2 points that I want to make, I'll start with the question of how the Americans are looking at the world in this period, and then turn again to Pakistan. And I add, I am not in the American diplomatic service. I am retired. And as all of you know, the definition of a diplomat is someone who will do everything for his country except live there, right? I no longer live in the United States. And so I'm giving you a set of insights that will come from my patriotism and my understanding, but from the outside. So I hasten to add that. In the United States, we're undergoing a transition where we're redefining, I believe, the way we do foreign policy, the way we deal with the world. In this part of the world, for the last 20 years, the lens through which we have overwhelmingly looked at issues has been the lens of counterterrorism and the results, as others have said, of the period after 9/11. What that means is that the way in which the American government has formulated its approach to issues here has almost invariably been, as many have said, through the lens of Afghanistan. This is something that I have found to be unfortunate. I believe that Pakistan's vision, or the American vision of Pakistan, has been distorted by the looking at it through the lens of the tensions and the problems in Afghanistan. And this period is come to an end. This means that for many, many years in the United States, people who studied Afghanistan, people who studied Pakistan, people who dealt with Pakistan and its role in the region, by necessity were linking it with the American efforts and the international efforts to fight terrorism